So next we will discuss principle of ELISA. ELISA, as we have already discussed, it is based on that we detect particular antigen and antibody due to their interaction. So this method can be used to detect presence of particular antigens or antibodies with the help of corresponding reagents. The enzymes labeled antibodies, then their substrates, and so on. An antigen is first of all immobilized, or it is coated to a solid surface like polystyrene plate, and it is then complexed with then a particular antibody which is linked with enzyme. Non-specific binding of antibody is prevented by the use of 1% BSA, for example, or some other agents. The purpose is to avoid false positive results. Enzyme conjugated antigen antibody complex is incubated with a substrate to produce signal which may be in the form of some colored product. The most crucial element of detection strategy is highly specific antigen antibody interaction, and due to this interaction we are able to find out the concentration of that particular antigen or antibody. ELISA can be direct or it can be indirect, depending on whether we are using directly labeled primary antibody और डायरेक्टली लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी. सो अगर हम डायरेक्टली लेबल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ करें तो इस एलाइजा को हम डायरेक्ट एलाइजा कहते हैं, और अगर हम जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो अनलेबल्ड यूज़ करें और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो लेबल्ड यूज़ करें तो इसको हम इनडायरेक्ट एलाइजा कहते हैं. सो इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सिग्नल इज जनरेटेड बाय एंजाइम्स. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम प्राइमरी एंटीबॉडी या सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ एंजाइम टैग कर लेते हैं, लाइक हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज या कोई और एंजाइम. वो जो एंजाइम साथ टैग करने का पर्पस ये होता है जब हम उसकी सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा और उससे एक कलर चेंज या किसी और तरह की चेंज है वो प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. और ये जो कलर चेंज है that is actually a signal which is generated by enzymes in fixed proportion to allow the accurate amplification, quantification through various instruments like fluorometer, like luminometer or some other types of instruments. So जितनी वहाँ कलर चेंज आएगी एग्जैक्टली ही उतना ही वो एंटीजन की एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन होगी. तो इसलिए कहा जाता है the color change is directly proportional to the amount of the antigen or antibody which is present there, and this is measured with the help of these instruments like fluorometer or luminometer. It is also important to optimize the conditions for coating the antigens on the plates or for coating of antibodies on the plates. जाहिर है अगर कंडीशन हम ऑप्टिमाइज कर लेंगे तो हमें पता होगा कि इतनी देर हमने एंटीजन को या एंटीबॉडी को कोट करना है और वो प्रॉपर कोटिंग हो जाती है, और अगर वो प्रॉपर कोटिंग नहीं होती तो जो सिग्नल प्रोड्यूस होगा वो भी नॉन स्पेसिफिक सिग्नल प्रोड्यूस होगा.